This conference will now be recorded. Yes, guys, am I audible? Yeah, am I audible, guys? Can you hear me? Yes, sir. अरे तो बोलो ना भाई. थैंक यू यार. अरे 3 स्प्रिंट्स पॉसिबल होंगे ना, 1 2 3 स्प्रिंट प्लानिंग कैसे करना है वो बता रहे हैं आपको. अगर एक स्प्रिंट में 2 वीक्स है और 400 वर्किंग आवर्स निकल रहे हैं बेस्ड ऑन assuming there are 5 people in the team, तो आई कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 3 स्प्रिंट. स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2 एंड स्प्रिंट 3. स्प्रिंट 3 में प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा. So this planning I will do here, and this my scrum master will do. Then everybody is simply supposed to check the sprint document and complete their task and update the status. And for that same reason, you catch up every day for 5 minutes in a stand-up meeting which is called by my scrum master. And scrum master daily basis में check करेगा आपने कल क्या किया, what did you do tomorrow, what are you going to do today, and if you are facing any challenge. ये हर रोज चेक किया जाएगा. So will you be able to give any excuse after a sprint is over? ये नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ सर, एक्चुअली ये प्रॉब्लम आ गया था, एक्चुअली वो प्रॉब्लम आ गया था. ऐसे सब एक्सक्यूज दे पाओगे क्या? नहीं दे पाओगे ना. आपसे बोलेगा अरे तो तुमने कल क्यों नहीं बोला, इस पे स्प्रिंट में क्यों नहीं बोला, नेक्स्ट मीटिंग में क्यों नहीं बोला, सडनली कहाँ से आ रहा है. सो दिस मॉडल इज बेसिकली टू ब्रिंग यू इनटू डिसिप्लिन. है ना. ये मॉडल क्यों है भाई? ये मॉडल आपको डिसिप्लिन में लाता है. ओके. हाँ देख लो भाई. इफ यू आर वन ऑफ दोज पीपल राइट हु क्राइज अबाउट थिंग्स, ऐसा था वैसा था, ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ये आपने वो नहीं दिया, मैंने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया. अगर आप ऐसे सारे वर्ड्स यूज करते हो अपनी लाइफ में, हाँ तो फिर उसलिए ही है ये सारी चीजें जो कि होता है यूजुअली. stand up meeting is done while standing because we don't want you to waste more than 5 minutes. We'll give you exactly 60 seconds each person. stand up meeting conduct करने का there are certain guidelines, etiquettes which a scrum master has to follow, which we'll discuss in the further training session. After one sprint is over, everybody is called for a big meeting. It's called a sprint review meeting. और ये मीटिंग घंटे भर तो चलता ही है कम से कम. इस मीटिंग में सारे टास्क देखते हैं हो गया नहीं हो गया और स्प्रिंट को क्लोज करते हैं. ओके. अगर कोई टास्क नहीं कंप्लीट हुए फॉर एनी रीजन, वी पुश इट टू नेक्स्ट स्प्रिंट विद हाई प्रायोरिटी एंड हाई वार्निंग. जबरदस्त वार्निंग मिलती है डेवलपर को और उसको बोलते हैं ये तू कब तक खत्म करेगा, पूछते हैं. डन. एंड एवरीबॉडी वर्क्स लाइक दिस. रिमोटली वर्क करो, यहाँ से वर्क करो, जहाँ से काम करना है काम करो, काम खत्म हो जाएगा. डन. Any doubts up till now here, guys? Or else what I'm gonna do here is I'll start with a demonstration. Do you wanna ask me any doubts? No? Shall I go ahead with the demonstration? No doubts? Thank you. Thank you so much, guys. Guys, a quick feedback before I go to the demonstration. Do you feel this session is meaningful? ठीक लग रहा है? आपको सीखना चाहिए ऐसा है? I did a little recap about concepts which is much needed. Without the concept, you cannot go ahead. प्लेन उड़ाना है तो प्लेन उड़ाने से पहले पता रहना चाहिए ना, व्हाट आर न्यूटन्स प्रिंसिपल्स ऑफ लॉज आर देयर, व्हाट इज एन altimeter, व्हाट इज अ compass. There are 5 basic compass that are used for flying a plane.
Okay, all right, done. Now before we move on to the Jira is a tool. Okay, and I told you something, right? We don't care about tools, we care about process. आज जीरा है, कल अदरक आएगा, हमें प्रोसेस पता है तो हम किसी पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे. Remember, I'll give you a very good example. Tally. Have you heard of Tally software? Yeah. Have you heard of Tally software? You have heard of Tally software, right? Yeah. So people get trained for Tally. Tally क्या करता है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है. ये बटन रहता है, क्लिक 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 क्लिक, क्या बैलेंस शीट बन गया, इनकम टैक्स बन गया, इनवॉइस बन गया, क्लिक करने का रहता है बस. थोड़ा बहुत क्लिक, थोड़ा बहुत टाइप. ठीक है. तो बहुत सारे लोग टैली सीख के आते हैं. इन लोगों को ना अगर मैं पेपर पेन दे दूं ना, बोलूं ये बैलेंस शीट बना दो ये कंपनी का, नहीं बना पाएंगे. बोले सर वो टैली में अपने आप होता है कैलकुलेट. दैट्स माय प्रॉब्लम विद द टूल. Tomorrow if tally is not there, or tomorrow tally changes the way it is working, तुम्हारे skills तो nullify हो गए ना. Your skills are nullified, of no use. So you should first know how to create balance sheet paper pen पे. पेपर पेन पे तुमको पता रहना चाहिए बैलेंस शीट कैसे बनती है. उसके बाद में इट विल बिकम इररिलेवेंट तुम पेपर पेन पे कर रहे हो, टैली यूज करके कर रहे हो, एसएपी यूज करके कर रहे हो, या क्या टूल यूज कर रहे हो, वेब बेस्ड है, डेस्कटॉप बेस्ड है, या और दिस इज सिंपल पेपर एंड पेन. वन हु नोज द प्रोसेस कैन वर्क एनीवेयर. एम आई राइट? डू यू एग्री विद मी? जिसको प्रोसेस पता है वो भाई कहीं भी किसी पे भी काम कर लेगा. राइट? ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी टूल. बट जो सिर्फ टूल के पीछे पड़ा है ना, जिसने सिर्फ टूल सीखा हुआ है, अब वो बहुत लंबा स्केल नहीं हो पाता, वो फंस जाते हैं उसकी गाड़ी खड़ी कहीं ना कहीं. राइट? एंड दिस इज व्हाट आई फॉलो. तो प्रोसेस समझ लेते हैं. सो फर्स्ट लेट मी टेल यू हाउ टू इम्प्लीमेंट स्क्रम एंड स्प्रिंट मैनेजमेंट इन अ सिंपल एक्सेल शीट. फिर वी विल गो टू द जीरा. विल दैट बी ऑल राइट फॉर यू? क्योंकि जीरा में ना बहुत सारे अननेसेसरी सॉफ्टवेयर, बहुत सारी चीजें, we will compare and see. So first Excel पे कर लेते हैं, ठीक है, फिर जीरा पे करेंगे. So now what happens here is, देखो प्रोसेस समझ लो. suppose your project is suppose your project is you are building AI AI बेस्ड कोई सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो. आप क्लाइंट से मीटिंग किया, आपने RGAP किया. ओके, RGAP, राइट? RGAP, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस एंड प्लानिंग, ऑल्सो अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिक्वायरमेंट गैप. क्या बनाना है वो चीज नहीं रहता, तो आप क्या करते हो, उस गैप को फिल करते हो बाय यूजिंग रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स. सब चीज करने के बाद SRS आ गया. SRS में आपने पूरी डिटेल्स डाल दी. यू आल्सो क्रिएटेड लॉट ऑफ UML डायग्राम्स. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ UML डायग्राम्स माय डियर फ्रेंड्स. राइट? एक फंक्शनल डायग्राम होता है, एक बिहेवियरल डायग्राम होता है, एक स्ट्रक्चरल डायग्राम होता है जो स्ट्रक्चर पता करता है सिस्टम का, एक बिहेवियर पता करता है सिस्टम का, और एक कम्युनिकेशन बताता है. तीन कैटेगरीज ऑफ UML डायग्राम होते हैं. इसके अंदर भी बहुत सारे UML डायग्राम्स होते हैं. ओके, ये सारे डायग्राम से सिस्टम में क्या बनाना है हमें समझ में आता है. Once we are very clear what we have to build, then we convert them into modules. Modules are further divided into tasks, right? So ये देखो, ये रहा modules. After completing all the process, we have converted it into modules. Module number 1, module number 2, module number 3, 4, 5, 6, 7, 8. सबको हमने डिवाइड कर दिया अलग अलग. अब हम करेंगे स्प्रिंट प्लानिंग. दिस इज माय स्प्रिंट नंबर 1. स्प्रिंट नंबर 1, module number 1, task number 1. Give a simple name to the task. Add some details. आईडी होनी चाहिए दोस्त. आईडी से आइडेंटिफाई करते हैं. ये स्प्रिंट 1 वीक का है, सो इट विल स्टार्ट ऑन 9th March
and finish on 16th March, 1 week sprint. So 9th March, this assigned. Any further details? Add the details. कुछ files add करनी है, add कर सकते हैं. Assigned to which resource? We have 5 resource, so you are assigned to the resource. कितना टाइम दोगे इस काम को करने के लिए? ये काम कौन डिसाइड करता है कितना टाइम देना चाहिए? प्रोजेक्ट मैनेजर विल कॉल यू, बोले इधर आ, ये लोगो बनाना है, बोल कितना टाइम लेगा. आप बोलोगे सर कल तक का टाइम दे दो, ठीक है. प्रोजेक्ट मैनेजर बोले ओए ऐसे नहीं होता है, टेल मी एग्जैक्ट टाइम हाउ मच यू विल टेक. कल तक मतलब कल सुबह 8 बजे देगा या रात को 10 बजे देगा? बोलेगा सर कल रात को 10 बजे तक दे दूंगा सर. प्रोजेक्ट मैनेजर बोला सुन, लोगो बनाने के लिए रीजनेबल टाइम इज 1 आवर. चल जा, तू भी क्या याद रखेगा, तेरे को मैंने 3 घंटे दे दिए. सो व्हाट प्रोजेक्ट मैनेजर डज इज विद हिज एक्सपीरियंस, किसी भी टास्क को करने के लिए कितने एफर्ट्स लगते हैं, राइट? एंड देन यू मल्टीप्लाई इट बाय अ फैक्टर ऑफ 1.5, समटाइम्स इवन 2, बेस्ड ऑन किसको असाइन कर रहे हैं, उतना टाइम दे देते हैं. ठीक. नाउ हियर आई वांट टू क्विकली टेल यू गाइस, इंडस्ट्री में ना सर मेरे को सीखना पड़ेगा, पहले मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा लोगो डिजाइनिंग क्या होती है. तो कंपनी वाले ना सीखने के पैसे नहीं देंगे आपको, काम करने के पैसे देंगे. अगर आपको नहीं आता है और आपको सीखना पड़ रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू गो टू द वेबसाइट, लर्न थिंग्स एंड देन इम्प्लीमेंट इट. हाँ गाइस, दैट वुड बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू, बिकॉज नो क्लाइंट्स पेज यू टू लर्न, है ना. क्लाइंट दो चीजों के लिए पैसा नहीं पे करता दोस्त: डिस्कशन, मीटिंग्स एंड योर सेल्फ लर्निंग. अगर क्लाइंट नहीं पे करता है तो कंपनी कैसे, कहाँ से पे करेगी? तुम जितने भी डिस्कशन करना है कर लो, जितनी मीटिंग करनी है कर लो, इसके पैसे नहीं देते. इमेजिन तुम्हारे घर में रिपेयर, फ्रिज रिपेयर करने वाला है, वो एक असिस्टेंट लेके आता है हमेशा, ये दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं. Bro, I think the temperature of the uh, this fridge is not optimum. I suspect highly the compressor might be facing a lot of intraverticular pressure, and that is why possibly the cooling is not effective. Also the humidity, as I can see, is quite not appropriate for this kind of machine. Uh, right, so what do you suggest, bro, what we should do? Bro, we should start with the upper module, right? And from the upper module we should take care of the fridge refrigerating chamber. है ना, आपस में डिस्कशन चल रहा है, 2 घंटे डिस्कशन चले, 3 घंटे डिस्कशन चला, फिर 1 घंटा उसको फिक्स किया उसने. आपने पूछा भाऊ कितने झाला, कितना हुआ? बोला 1,000 रुपया रिपेयर का और 3,000 रुपया वो हमने डिस्कशन किया ना, उसमें 3 घंटा गया हमारा, तो टोटल 4,000 रुपया. विल यू पे 4,000 रुपीज, 3,000 रुपीज फॉर द डिस्कशन? विल यू पे गाइस, यस और नो? या यू वोंट, nobody will pay you. So discussions and meetings, that's why scrum meeting is also called as a stand up meeting, बिकॉज पाँव दुखेंगे तो जल्दी मीटिंग खत्म कर दोगे. तुम्हें चेयर टेबल पे बैठा देंगे, कॉफी दे देंगे, तो तुम स्टैंड अप मीटिंग 1-1 घंटे तक लोगे. दैट इज रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैंड अप मीटिंग. सेल्फ लर्निंग, मैं सीख के इम्प्लीमेंट करूंगा, उसके पैसे नहीं मिलते. तो आई विल ओनली असाइन यू हाउ मच टाइम इट इज रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, एंड आई विल डेफिनेटली गिव यू एक्स्ट्रा टाइम, बट आई विल नॉट गिव यू इलीगल टाइम फॉर योर सेल्फ लर्निंग. ठीक है, हाँ, तो पढ़ लो, इंडस्ट्री ट्रेनिंग्स वगैरह होती है तो ज्वाइन कर लिया करो. राइट, ओके, डन. आई विल गिव यू एन एंड डेट, कब तक खत्म करना है आपको विद इन द स्प्रिंट.
We'll also assign the severity. High है तो पहला करना है, medium है तो उसके बाद में. So what will happen here is, suppose you log into your system. मैं आगे बताता हूँ. Severity आपको assign कर दी जाती है high, medium, low based on the work. For example, login button बनाना है. It's a high priority thing. For example, color change करना है button का. It's low priority thing. Complexity you decide. Okay. Once it is assigned, it will be having the status assigned. When you start working on it, it is in progress. Once you have completed it, you will write submitted. फिर वो check in कर लेगा या वो code अपने पास ले आएगा. Get. Have you guys worked on Get? Have my dear friends worked on Get? Git, Git, GitHub. Have you have you guys worked on Git? Get commands. क्या? I क्या? My software engineers do not know Git. अरे कैसे चलेगा guys industry में यार? Very first thing that you come to my industry, I'll ask you door पे कंपनी का दरवाजा खोलूंगा, पहले पूछूंगा. क्या पूछूंगा? तुला गेट माहिती का? Hmm? Do you know what is get? Do you know how to use get? तुमने बोला no. So the project manager will say immediately, yeah, निकल, पहली फुर्सत पे निकल. Okay, good. uh, if it is there in syllabus कर लेना, or we'll conduct a workshop for you. Okay, understand the semantic of it. We might also, yeah, part of DevOps है ना. हाँ, DevOps tool है. Thank you ma'am. Git is a DevOps tool. It's one of the most important tools. Syllabus में cover हो जाएगा. Otherwise, you let me know. We'll conduct a workshop for it. Ma'am, can we do a workshop for it? Yeah, we'll plan. We'll see. All right. Status. Is there any remark you want to write down? Something you can write down. Sir, मेरे को ये फाइल नहीं मिला. जितना रोना धोना है यहाँ लिख दो. Now my project manager or my product owner will write down approved or not approved. Okay. Approved तो ठीक है. Not approved तो not approved. Approved with some remarks, so I'll write down remark. ऐसा नहीं है मैंने कर दिया तो काम हो गया. Right? Done. ऐसे सबको असाइन हो जाएगा अपना अपना काम. कब असाइन होगा? हाँ, मंडे मॉर्निंग सबको असाइन हो जाएगा. And you complete it. One by one you complete it. Okay. So 7 days का sprint रहता है. मंडे टू सैटरडे आप इस पे काम करोगे. कुछ अगर छूट गया है, संडे बैठ के तुम कंप्लीट करो इसको भाई. Right? If you are not able to complete something, you still have one Sunday. You put your personal time and you complete it. Now what I will do here is, every day I will log into the system. Suppose my name is श्रीमणि रत्नम. अंकित डाल दो यार. मेरा नाम अंकित है. तो मैं हर सुबह आऊंगा, यहाँ देखूंगा मुझे क्या असाइन है, कितना टाइम है, और मैं इसको फॉलो करके I just in progress completed. I'll update the status. I'll update the status. Now I am the Scrum Master. So my Scrum Master, what I'll do here is कितना in progress में, right? कितना submitted है. Okay, my Scrum Master will use the same sheet. Suppose I'm the project manager. Right? I'm the project manager, so I'll see who is working and where. So everybody will see this sheet, including my client. मेरा client को भी ये share रहता है. वो भी देखेगा कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है. So using sprint, I will manage this particular thing. 1 week is over, or 2 weeks, जितने भी week का sprint है. So what we'll do here is we'll call up a meeting.
डेली मीटिंग तो हो रही है, डेली मीटिंग में पूछेंगे यार तेरा ये टास्क था तूने कंप्लीट किया, बोलेगा हाँ सर मैं कर रहा हूँ। कब तक कर लेगा सर? आज तक कर लूंगा मैं। तो ये डेली मीटिंग में ये आएगा ही आएगा। लेट मी क्लियर दिस। डेली मीटिंग में यही डिस्कस होता है। ओके अंकित, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे? तो स्प्रिंट मैनेजर के, मेरे स्प्रिंट मास्टर के पास ये शीट रहेगी राइट, मैं देखूंगा तेरे को ये काम करना था, ये काम करना था, तुमने बोला कि सर हो गया है तो अच्छी बात है, तुमने बोला नहीं हुआ, हाँ तो तुमसे पूछेंगे क्यों नहीं हुआ, आप बताओगे क्या चैलेंजेस आए। फिर दो चीजें होंगी, या तो आपके चैलेंज को सॉल्व कर लेंगे, बट अगर आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज, हाँ तो वी विल, हाँ देन तो यू आर गॉन, then we'll catch hold of your neck and press it as hard as possible and squeeze the life out of you. Okay, if your challenge is फालतू चैलेंज, अगर आपका प्रॉब्लम एकदम फालतू प्रॉब्लम है ना, कि सर मेरा पीसी नहीं चल रहा था सर, सर उसने मुझे बोला ही नहीं सर, हाँ ऐसे है ना, सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था सर, समझ में नहीं आ रहा था पहले क्यों नहीं पूछा। सो हाँ डिसिप्लिन में आ जाते हैं सबके सब। इट टेक्स एन ईयर और टू गाइस, यू गेट इनटू द डिसिप्लिन। कॉलेज वाला एटीट्यूड धीरे धीरे चला जाता है। वंस आई मीट यू आफ्टर एन ईयर और टू, you all would be a different personality, much more matured, much more disciplined, less and less of excuse, more and more of taking ownership, responsibility and accountability. That will happen. And if you are पहले से ही responsible, accountable and you are not somebody who gives excuses, take ownership and you don't cry about things, right? You are always part of the solution, you keep everyone motivated, तो आपके लिए और अच्छा होगा, फिर वो आप बहुत जल्दी स्केल अप करोगे कंपनीज में। Alright. So daily scrum meeting में I will open this up. I'll ask everybody three questions. One, two, three. Tomorrow, today, and challenges. ऐसे सबसे पूछ लेंगे खत्म. Once this time is over, what I'll do here is I will close it. How to close it? I'll lock it. Right click on it and I'll lock it. Can you see lock button? Yeah, I'll lock it. पासवर्ड डाल के लॉक कर दूंगा, तो इसमें अब कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा। फिर जिसका कंप्लीट रह गया रह गया, जिसका इनकम्प्लीट रह गया इनकम्प्लीट रह गया। फिर इसमें से जो इनकम्प्लीट हो गया है मैं एक नया स्प्रिंट बनाऊंगा उसमें डाल दूंगा, but that will go as overdue. Can you see the overdue status? पिछले में से कैरी फॉरवर्ड आया, overdue, and this sprint we will close. At this sprint we will also see the performance of my team members and we will create a chart. There is a chart, right? This chart is called as burn down chart. We started with minus 400 tasks. After sprint 1 कितने टास्क खत्म हो गए, आफ्टर स्प्रिंट 2 कितने टास्क खत्म हो गए। तो ये सिंपल बार ग्राफ बनता है दोस्त, लाइन चार्ट बनता है, नॉट बार ग्राफ, लाइन। और ये ऐसे जाना चाहिए नीचे। वी वांट टू रीच हियर जीरो, आफ्टर स्प्रिंट 4 जीरो होना चाहिए, ये देखते हैं। आइडियली ऐसे रहता है बट यूजुअली ऐसे ऐसे थोड़ा ऊपर नीचे जाता है। तो हम देखते हैं एक्चुअली हमारी टीम कैसी परफॉर्म कर रही है, कंसिडरिंग दिस चार्ट इज कॉल्ड एज बर्न डाउन चार्ट। नेगेटिविटी देखते हैं हम इसमें। 400 टास्क थे तो माइनस करते करते जीरो पे जाना, इसलिए बार नीचे जाता है। देयर इज आल्सो कॉल्ड एज बर्न अप चार्ट। स्टार्टिंग में जीरो टास्क था, फिर एक खत्म किया, फिर दो, ऐसे जाना। Okay. Can I have a quick confirmation? Thank you. Thank you guys. Thank you so much. Okay.
ऑल राइट, लाइकवाइज sprint 1 sprint 2 sprint 3 sprint 4 करके खत्म हो जाता है सारी चीज. नाउ इज द स्प्रिंट कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. फिर एक रिपोर्ट भी बनती है, राइट, स्प्रिंट्स की. इज द कॉन्सेप्ट क्लियर गाइस? या नाउ एक्सेल शीट है. देखो, हर इंडिविजुअल को टास्क असाइन किया गया है. अंकित है, उसको टास्क, और उसने उसको 2 टास्क में डिवाइड कर दिया. टास्क का डिस्क्रिप्शन, अलॉटेड टाइम दिस, इतने बजे स्टार्ट किया, इतने बजे खत्म किया, टोटल टाइम इतना लगा. ये टास्क पूरा असाइन हो जाता है एक एक इंडिविजुअल. सो एनीवन कैन कम एंड चेक किसको क्या टास्क असाइन हुआ, और वो उसे कंप्लीट करेगा. दिस इज नाउ दिस इज अ सिंपल स्प्रिंट ट्रैकर शीट. दिस इज अ स्प्रिंट ट्रैकर. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है. मैंने इसमें पेपर पेन में भी कर सकता हूँ मैं, बट मैंने एक्सेल में यूज किया है. थोड़ा अच्छा है, लेकिन इसमें 2-4 चैलेंजेस है यार. एक तो फाइल किधर शेयर करूं मैं, और मुझे अंकित से इमीडिएटली चैट करना है तो कैसे चैट करूं, राइट. और मुझे है ना वो बार बार अंकित का नाम टाइप करना पड़ता है. कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जहां मैं सीधा @अंकित लिखता, हैशटैग अंकित, तो अंकित के पास नोटिफिकेशन चला जाता. मैंने कोई टास्क क्रिएट किया तो किसी को अपने आप नोटिफिकेशन नहीं जाता ना इसमें. अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना दूं कि मैंने इधर अंकित सेलेक्ट किया तो अंकित को इमीडिएटली मेल चला जाएगा, न्यू टास्क हैज बीन असाइंड. तो अगर ये छोटे मोटे फीचर्स ऐड हो जाएंगे तो इट विल बी कूल, राइट? डोंट यू एग्री? इट वुड बी कूल मैन, है ना? थोड़ा लाइफ इजी हो जाएगा यार. करेक्ट. इफ यू हैव सर्टेन tools are there just to help you to save some of your time. Tool is not is equals to technology. टेक्नोलॉजी अलग होती है, टूल अलग होता है. टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, टूल तो आते जाते रहते हैं, लेकिन टूल रहते हैं तो लाइफ इजी हो जाती है. एंड वन ऑफ द टूल्स that can help you do is Jira, right? जीरा. जीरा सुन के मसाला समझे क्या? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है मैं. So we'll have a look at Jira. Then for that you will require a Jira account. So you guys have Jira account? No? Yes? So we'll create one. You have Jira account? No? We'll create one. Okay. So now is the time guys where you have to perform things with me. स्प्रिंट प्लानिंग ये वाला हम जब फर्दर ट्रेनिंग में जाएंगे तो हम ये मैनुअल कैसे करते हैं, एक्सेल से कैसे करते हैं, ये हम बाद में देख लेंगे. ओके, लेट्स गो अहेड विद Jira. This training gets into complete detail, right? And those who are interested to do a complete certification of 30 hours and get Scrum certified, there is a link that has been shared in your group, है ना? वहाँ नाम डाल दो. So what will happen here is, अभी तो हम सारा चीजें देख रहे हैं, which is also enough. स्क्रम सर्टिफिकेशन होता है. स्क्रम ये सब सीखने के बाद स्क्रम के प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको भी सीखना होता है, बहुत सारी चीज़ें और देखनी होती है. एंड देन स्क्रम सर्टिफिकेशन का एग्जाम होता है. वो एग्जाम क्लियर करते हो तो आपको स्क्रम सर्टिफिकेट मिलता है. वो सर्टिफिकेट सर्टिफाई करता है कि येस आई एम स्क्रम क्वालिफाइड एंड आई नो स्क्रम, आई कैन इम्प्लीमेंट स्क्रम. दैट सर्टिफिकेट यू कैन शो in your companies. Two things it will happen. Number one, you can apply for the role of scrum masters. Scrum masters are highly paid people. ठीक है, 8 लाख से 15 लाख की स्टार्टिंग सैलरी होती है स्क्रम मास्टर्स. ओके, बिकॉज स्क्रम मास्टर इज माय बैंड मैनेजर. पूरा पूरी टीम स्क्रम मास्टर के इशारे पे नाचती है. सेकेंडली, एज अ डेवलपर ऑल्सो यू विल बी वर्किंग इन स्क्रम फ्रेमवर्क. तो अगर आपको स्क्रम सर्टिफिकेशन है, मतलब आप इस फ्रेमवर्क में इजीली काम कर पाओगे. तो वी प्रेफर सच कैंडिडेट जिनको एसडीएलसी और स्क्रम आता है. हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है, क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग आए मत आए, स्क्रम आना चाहिए, क्योंकि हम स्क्रम में काम करोगे. Okay, so there is the link in the chat box. If you are interested for certification program, please enroll yourself so that we can accordingly plan.
Done. Jira. Jira is a product of Atlassian. Do you guys know about Atlassian? Jira is a product of the company called as Atlassian. Atlassian, Atlassian is godfather of developers. Okay, क्योंकि Atlassian कंपनी ने डेवलपर्स को हेल्प करने के लिए इतने प्रोडक्ट्स बनाए हैं ना, क्या ही बताओ आप. Atlassian कंपनी का एक प्रोडक्ट है जीरा और बहुत सारे बनाए हैं. चलो आ जाओ, क्लिक ऑन दिस फर्स्ट लिंक ऑफ जीरा. Yeah, here. Then add your email ID. आप कोई सा भी एक ईमेल आईडी ऐड कर सकते हो. आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी डाल सकते हो. देयर इज नो प्रॉब्लम. ऑल द सेटिंग्स कैन बी कस्टमाइज लेटर आल्सो. अभी हम जो स्टेप करेंगे ये सारी सेटिंग्स बाद में भी कस्टमाइज हो सकती है. लेट मी पुट माय वर्क ईमेल आईडी हियर. ऑन साइन अप. नेवर साइन अप विद गूगल. नेवर साइन अप विद गूगल. Always add your email ID. Right. Immediately it will send you a verification email. May I request everybody to please follow the steps. Gmail में जाना है, वो ईमेल आएगा, वेरीफाई कर लो यार. Done. Verification done. Add your full name. Add a password. पासवर्ड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना लो. Click on sign up. पासवर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना लेना. Done. I have reached up till this step. My sincere apologies. I have turned off my camera because of the internet issue. Yes, guys, please let me know if I'm too fast or too slow. Yeah. All right. Don't jump the steps, guys, because I want to help you understand a lot of details. ऐसे मत करना, नेक्स्ट करके फटाफट साइन अप मार लिया. You know, just follow the flow. Yeah. Like I have already told you, Jira is just a project management tool. Agile is a process. It can be used for process management, business development, BD, process management, or software development. कहीं भी use कर सकते हो. Jira is also used for software testing. Okay, tool है यार, पेंसिल है ना. पेंसिल से तुम लिख लो या पेन फाइट खेल लो या किसी की आंख में डाल दो. तुम्हारी मर्जी है यार. ठीक है यार, चम्मच नहीं मिल रहा है, कॉफी में चीनी मिक्स कर दी है, चम्मच से मिक्स कर लो, अरे पेंसिल से मिक्स कर लो. इट्स अप टू यू. सेम वे यार, जीरा कैन बी यूज्ड इन मेनी वेज. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. आई एम गोना यूज इट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. ओके. व्हाट इज योर मेन टास्क? ये क्यों पूछ रहा है पता है क्वेश्चन? सो अकॉर्डिंगली इट विल हेल्प यू चूज मेनी डिफरेंट फीचर्स ऑफ जीरा. वो अकॉर्डिंगली रिकमेंडेशन देगा. तो यार मुझे सपोर्ट भी चाहिए. प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड हेल्प डेस्क नहीं चाहिए हमें. ट्रैकिंग चाहिए. क्वालिटी टेस्टिंग और एश्योरेंस नहीं चाहिए.
डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वर्कफ्लो, राइटिंग कोड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, यस इतने. यू कैन सेलेक्ट एनी वन और यू कैन ऑल्सो स्किप दिस क्वेश्चन, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट ये क्यों कलेक्ट कर रहा है, ये अकॉर्डिंगली आपको है ना बताएगा कि जीरा के किन फीचर्स को यूज करना चाहिए. बाय द टाइम इट लोड्स, जीरा फ्री है भाई to a certain limit, then it will ask you for money. You can also download Jira and install it on your own server. Hmm? All right. Can you see Jira has got three? Now it is asking you, sir, किस तरह का project manage करना चाह रहे हो आप? Would you like to manage a Kanban type of a project? Kanban we had discussed, right? Yes, guys. Kanban we had discussed. That is why we were discussing previously. क्योंकि फिर वो discussion के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते. Scrum model में जाना है आपको या आपको कोई business development करना है? So we are not doing business development, but if you will come to the 30 hours of training program, we'll talk about business development also. Okay, business कैसे develop करना है, बड़े बड़े projects को कैसे run करना है, right? Now you understand why Deloitte, Deloitte company, do you know? USA के सारे government project Deloitte handle करती है. TCS, Wipro, हमारे इंडिया के सारे government project TCS and Wipro handle करती है. Which company handles Aadhaar card? Which company handles Aadhaar card? Which company handles passport? पासपोर्ट टीसीएस हैंडल करता है, आधार कार्ड विप्रो हैंडल करता है, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट इनटू ऑल दीज डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट. तो इतना बड़ा सॉफ्टवेयर ऐसे किसी को नहीं देते, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो यही यूज करते हैं प्रोसेस. तो व्हाट विल डू हियर इज वी विल स्टार्ट विद kanban मॉडल. हम kanban मॉडल से स्टार्ट करेंगे एंड देन ऑल ऑफ दीज सेटिंग्स कैन बी चेंज लेटर ऑन ऑल्सो. बाद में भी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं हम अंदर जाके. हम kanban मॉडल से स्टार्ट करते हैं, देन वी विल ऐड scrum to it. So select Kanban and do next. Done. Yeah. Now what I'll do here is, it is asking me project का नाम बताओ. So within my Jira account, I can manage multiple projects. So suppose, yeah, I this is my project name. ठीक है, PMBRY. Do you know what is PMBRY? नहीं. This project I'm this project I'm designing for university student. This project is called as प्रधानमंत्री बेरोजगार योजना. बिकॉज ये सब नहीं सीखोगे तो यही यही करना पड़ेगा फिर. ऑलराइट, jokes apart. Okay, this is done. Now template that I'm gonna use is Kanban model. ना मुझे इसमें Scrum model भी मिलेगा और भी है. देखो, if I click on this, I'll get many other models. Now this project is managed by the team. Organization management भी रहता है कंपनी वाला. कंपनी वाला आप तब यूज करते हो जब आपका खुद का सर्वर होता है. When you say company, that means one person can only manage it. When you say team manage means हर कोई इस पे changes कर सकता है. It's like where everybody is admin. Then there is something called as key. की प्रोजेक्ट के नाम के हिसाब से अपने आप एक सजेशन में आ जाता है. व्हाट इज की? सपोज यू हैव मेनी प्रोजेक्ट्स, राइट? ओके,
तो की इज लाइक अ यूनिक आइडेंटिफायर. देखो यहाँ पे ऐसे शॉर्ट शॉर्ट वर्ड शॉर्ट कोड है, इट्स स्मॉल शॉर्ट कोड. तो अगर कोई टास्क होगा ना तो टास्क के आगे PMBRY लिखा रहेगा, PMBRY टास्क 1. इससे क्या पता चल जाएगा ये प्रोजेक्ट का टास्क है ये. तो दिस इज लाइक ए शॉर्ट यूनिक आइडेंटिफायर. यू कैन चेंज इट ऑल्सो. बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट के नाम के हिसाब से ये बन जाता है अपने आप. डन. डन. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज की? डेटाबेस क्रिएट होता है तो ये नाम से क्रिएट होता है, मतलब ये प्रीफिक्स है, इट इज लाइक अ प्रीफिक्स, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई ये टास्क किस प्रोजेक्ट का है. Once that is done, click on create project. Guys, at any point of time, if you feel I'm going too fast, do let me know. And if you have any simple, easy, difficult doubt, or maybe common sense related doubt, or any kind of doubt, ask him. Maximum what will happen is little bit of bejati. Another reason why Jira is so popular among companies is free तो है ही है, open source तो है ही है, right? It can, it has various different models. Kanban भी use कर सकते हो, Scrum भी use कर सकते हो. Okay. अलग अलग मॉडल्स में स्विच भी कर सकते हो आप एजाइल के, वो भी एक है. प्लस यू कैन ऐड लॉट ऑफ एड ऑन्स. आप माइक्रोसॉफ्ट टीम, जूम मीटिंग लेनी है, जूम, गिटहब, गूगल शीट, ऐसे more than 1,000 add-ons you can add to Jira and increase its capability. That is also reason why it is required. One of the tools that is required is GitHub. GitHub में ना सारा कोड कलेक्ट होता है जो आप बाद में देखोगे. गूगल शीट भी कर सकते हो आप लॉग इन. Many other things. तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो डाल दो. ये दो तीन चीजें तो चाहिए ही रहती. माइक्रोसॉफ्ट टीम इज फॉर मीटिंग्स. नेक्स्ट. डन. ये आ गया. इज दिस देयर? हैव वी रीच दिस प्लेस? डन. या. चलो आगे बढ़ते हैं. एंड लेट्स हैव अ लुक ऑफ व्हाट ऑल थिंग्स इज देयर. क्या क्या चीजें हैं हमारे पास. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द यूआई पार्ट. मेन हेडर. In my main header, there are many other Jira softwares which I can switch to. Okay. अगर जरूरत पड़ी तो नहीं करना है, but my main task that has been assigned to me will show here, which will come in some time. All my projects, one project is there, वो यहाँ रहेगा. सारे projects मैं यहाँ पे कर सकता हूँ. Multiple projects I can manage, so I can create more projects here. Dashboard for this project can be shown here. अभी कुछ है ही नहीं तो कुछ नहीं दिखेगा. I can manage and invite a lot of my team members. I can create a team, which we'll do right now, and I can connect different apps. Okay. Notifications, मेरे को कोई टास्क असाइन हुआ तो दिखाएगा. सेटिंग्स, प्रोफाइल सेटिंग्स, योर नेम, ईमेल आईडी, फोटोग्राफ, etc. On the left hand side is my main navigation menu. Number one. Number one. Board. Right, board. Can you see three boards here?
to do, in progress and done, है ना? 3 boards are here. Kanban ये देख रहे हैं, फिर स्क्रम भी देख लेंगे. पहले हम Kanban देखेंगे, फिर स्क्रम भी देख लेंगे. ये बोर्ड है ना, दिख रहा है ना सेम. सर टेस्टिंग नहीं है. So अभी ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है. इट इज अप टू यू हाउ यू वांट टू यूज इट. इफ यू वांट टू ऐड वन मोर कैटेगरी कॉल्ड एज टेस्टिंग, यू कैन ऐड इट. हम तो डालते हैं भाई. इस सॉफ्टवेयर में टेस्टिंग में जाना चाहिए, तो ये यू कैन मूव इट आल्सो लाइक दिस, ड्रैग एंड ड्रॉप. 4 major stages. 4 major stages. Then now what I'll do here is, my each task is nothing but issue. मेरा जो टास्क होता है ना, वो इशू होता है. उसको हम इशू बोलते हैं जीरा में. से अब जीरा है तो जीरा के टर्म्स यूज करने पड़ेंगे यार. थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे. जीरा इज बिल्ड इन देयर ओन वे. उसने अपना लॉजिक दिमाग लगाया होगा. वो बोलेगा कि मैं टास्क नहीं बोलूंगा, मैं इशू बोलूंगा. राइट. तो इशू जैसे आपने बोला लोगो डिजाइन करना, फिर एक ने बोला कि भाई लॉगिन पेज बनाना है. अलग अलग चीज. टू डू. Now this to do is not been assigned to anyone, unassigned है. So what I'm gonna do here is, I'm gonna click at it. When I'm gonna click at it, now my issue can be assigned to someone. Before I assign to someone, I would like to add details to this. हमारा वो एक मिनट, हमारा sprint document है. Yeah, we'll use this as a reference. ये रहा भाई, ये रहा. So the task here was low level interfacing. Because ये login के बदले we'll make it low level interface. Okay. Low level interface. Click on it. Now this is again divided into 3 categories. तो मैं इसके चाइल्ड इश्यूज बनाऊंगा. सब टास्क. 1 created, second created, third created. And I further divided into 3 child issues. My this task का छोटा description I may put when and where required. डालना ही चाहिए होता है. डाल दिया मैं. कुछ फाइल अटैच करनी है तो कर देते हैं. क्या ही फाइल अटैच करेंगे, चलो कुछ कर लेते हैं. Done. File attached. Any references, websites, you can attach everything. Okay, done. अभी ये किसी को assign नहीं हुआ है. So what I'll do here is I'll assign it to somebody. मेरी टीम में अभी सिर्फ मैं ही हूँ, तो मैं अपने आप को assign कर लेता हूँ यार. ठीक है, I've assigned it to myself. Done. Yeah. वो मैंने attach किया था, वो ये रहा, ये इधर आ गया. इसको है ना ये हटा देते हैं. Image distracting. नहीं रहने देते हैं.
We'll just hide on the card. हट गया, रिफ्रेश किया, ये रहा। देखो इधर मेरा नाम आया है, शॉर्ट कोड ऑफ माय नेम, और इधर 3 इश्यूज भी है, मतलब आई हैव फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 थिंग्स, आउट ऑफ विच 0 इज कंप्लीटेड। ओके, लाइकवाइज सबको टास्क असाइन हो जाएंगे। रिमेंबर दिस इज अ kanban मॉडल, सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंट, दिस इज अ kanban मॉडल। ऑलराइट, नाउ व्हेन आई लॉग इन टू माय सिस्टम, कैन यू सी माय वर्क? ऐसे मुझे मेरे सारे टास्क मिल जाएंगे। आई विल ऑल्सो गेट एन ईमेल नोटिफिकेशन इफ इट इज enabled। अगर enabled है तो मुझे ईमेल भी आएगा, a new task has been assigned। Okay, once I start working on it, I will shift it to in progress. One task in to do, one task in progress. Okay, yes. Once I'm working on it, if I want to add certain comments, I want to add certain comments to it. Okay, for example, awaiting details from @ यहाँ पे वो इंस्टाग्राम वाला @ चलता है, लेकिन @ में मैं ही हूँ खाली, क्योंकि मेरे टीम में एक ही मैं ही बंदा हूँ। अभी करेंगे, ग्रुप में भी करेंगे। ओके, ये आ गया, आई कैन ऐड इट, डन। या, remember here we do not work on deadline wala thing, here we work on what is the entire pivotal point here. How do we work here? We do not work on deadline, we work on there should be nothing in progress, that's the concept। Understood? इस मॉडल का बेसिक एजेंडा एक ही होता है, इन प्रोग्रेस में कुछ नहीं दिखना चाहिए दोस्तों, खाली करो इसको। once this is done, I'll put it into testing। once I have completed the testing, I'll put it into done। देखो ये completed बता, फिर ये ऐसे मूव हो जाएगा आगे 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 आगे, ये चीज मूव हो जाएगी। ऑलराइट, सो लोगो डिजाइनिंग आ गया। चलो, what I quickly do is I'll just fill some of the tasks। एक एक स्टेज में एक एक टास्क हमने डाल दिया। यू कैन ऐड मोर एंड मोर कार्ड टू इट, आप बहुत सारे और भी कार्ड डाल सकते हो आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से, यू कैन कस्टमाइज। एनी डाउट्स माय डियर फ्रेंड्स अप टिल हियर? नो? यस? नो डाउट्स? हाँ, फेयरली सिंपल। स्क्रम इतना सिंपल नहीं होगा, स्क्रम विल मेक इट लिटिल डिफिकल्ट। So now what I'm gonna do here is I'm gonna go to the settings, and just for the demonstration purpose, if you have created your ID, I want you guys to send me your email ID here on the chat box। I will add you as my team members and we all can now work on the same board। काम करो, देखो ये रहा। एक काम करो, फटाफट जिस ईमेल आईडी से आपने एटलासिन क्रिएट किया है जीरा अकाउंट,
मुझे चैट बॉक्स पे डाल दो यार। थैंक यू। आ रहे फटाफट डाल दो, फटाफट डाल दो, बहुत जल्दी जल्दी। एक, दो, बस दो ही लोग हैं। अरे 15-20 लोग हो तो दो कम से कम ईमेल आईडी। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ हाँ हाँ, वेरी नाइस, आराम आराम आराम। कॉपी, पेस्ट, कॉपी। You must have got invitation request on your Jira. Please accept it. आपको जीरा पे रिक्वेस्ट आई होगी और ईमेल पे भी आई होगी। Done only this much. You'll get a notification and you'll also get an email to join my organization. So ये सारे देखो सब आ गए, फटाफट ज्वाइन कर लो गाइस। कैसे ज्वाइन करोगे? इधर है ना, तुम्हें नोटिफिकेशन आएगा टंग। यू विल आल्सो गेट एन ईमेल टू ज्वाइन दिस। Done? Have you joined it? Yes, Aditya, I'll add this also. Now this is for demo purpose guys. There is no problem. You can share. पर्सनल इनविटेशन मेल डालना है क्या? हाँ देखो, हाय वेलकम टू समथिंग समथिंग आया होगा। आई कैन क्रिएट अ ग्रुप आउट ऑफ दिस। जितने लोगों को मैंने इनवाइट किया उसके ग्रुप बना सकता हूँ। ज्वाइन कर लो यार। हैव यू गाइस जॉइंड इट? यस।
Jira is free up to 10 users, I think. Yes. हमने 10 से ज्यादा यूजर्स डाल दिए क्या? Jira is free up to 10 users, which is, to be very frankly, good enough for any organization. क्योंकि एक टीम है ना, 10 में खत्म हो जाती है। एक एक्स्ट्रा हो गया। Task assigned to Damneet. Okay. Now this task will pop up in Damneet's. Task assigned to Shweta. Aditya. अच्छा, कंपनी में कभी ऐसा नहीं होता दो लोग मिलके एक काम करते हैं, ठीक है? हम कॉलेज में करते हैं सर, हम मिलके काम कर रहे हैं। कंपनी में ऐसा नहीं होता दोस्त। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज मिलके काम करना। एक काम एक ही इंसान करे, ठीक है? दो लोग मिलके साइकिल चला सकते हैं क्या? दो लोग मिलके कार चला सकते हैं क्या? हाँ, तुम हेल्प ले सकते हो किसी से, बट ये नहीं बोल सकते हो कि हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं। सो दैट लॉजिक नेवर वर्क्स इन कंपनीज. So Jira will not allow you to assign same task to two people. ये रहा board. I can create team also. Let me allow me to add somebody. Alright guys. I'll create my team members और फटाफट बोल दो, डाल देते हैं सबको, फटाफट डाल देते हैं। ज्ञानी, राइट? ज्ञानी में सबको डाल देते हैं। You know the reason why this is like this is because you should know कौन टीम मेंबर है कौन कौन नहीं है। ज्ञानी, मेविका, श्वेता, उत्कर्ष एंड वेदांत।
बस बस बस, मैं जहां कहीं भी @KC डालूंगा ना, सबको नोटिफिकेशन आएगा। या सबको नोटिफिकेशन जाएगा। तो ये पूरा एक बड़ा सा चार्ट बन के आ जाता है, राइट? आई कैन क्लिक ऑन इनसाइट एंड दिस विल टेल मी एग्जैक्टली क्या चल रहा है। नाउ लेट्स गो वन स्टेप बैक, एक स्टेप पीछे चलते हैं। यार हम डायरेक्टली टास्क नहीं बनाते ना, हमें पहले क्या बनाना होता है? हमें पहले सारे मॉड्यूल्स बनाने होते हैं, राइट? पहले हमें ये सब मॉड्यूल्स बनाने होते हैं, फिर हम इसको ब्रेक करते हैं टास्क में, फिर हम इसको ब्रेक करते हैं सब टास्क में, करेक्ट? एम आई राइट गाइस? यस। सो लेट्स गो वन स्टेप बैक, लेट्स गो वन स्टेप बैक। यहाँ आ जाओ टाइमलाइन पे, यहाँ पे वी कैन क्रिएट, हियर आई कैन ऐड एवरीबॉडी। हियर कैन ऐड पीपल टू द टाइमलाइन। चलो ये ठीक है, रहने दो, ये करते रहेंगे। नाउ हियर आई कैन क्रिएट समथिंग कॉल्ड एज एपिक। सी जीरा है ना, थोड़ा वर्डिंग टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी। क्यों? जीरा के बाप का भाई, जीरा बोलेगा मेरे को ये मर्जी, ठीक है, राइट? तो मैं अपने हिसाब से अपने टर्म्स के नाम रखूंगा ना, है ना ऐसा? जीरा मेरे बाप का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी मेरे बाप का, तो मॉड्यूल्स या हाई लेवल डिटेल्स का भी नाम मेरा बाप ही रखेगा, समथिंग लाइक दैट। आई होप यू गॉट द रेफरेंस। ओके, yeah, the reference is from a movie which I recently released, Epic. Epic talks about kind of like modules। ये मॉड्यूल, मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे स्टोरीज रहते हैं, टास्क रहते हैं। तो विल फर्स्ट क्रिएट एपिक। ओके, इज द एपिक क्लियर? जैसे कि हम एपिक में बात करें डिजाइनिंग, ओके, डिजाइनिंग एक एपिक मतलब एक मॉड्यूल, इसके अंदर हम टास्क क्रिएट कर सकते हैं। लोगो डिजाइन, HTML डिजाइन, सारे डिजाइन, यानी इसी में जितना भी इसके अंदर टास्क क्रिएट कर रहा हूँ, ये अपने आप टू डू में चला जा रहा है। कैन यू सी दिस गाइस? कैन यू सी दिस? या ऑल्सो दीज टास्क का डिटेल्स ये हमने अभी अभी देखा था थोड़ी देर पहले, सब आ गए। लेट्स कम टू द बोर्ड, इसको बोर्ड बोलते हैं। ये देखो, SRS डिजाइन, HTML डिजाइन सब अपने आप क्रिएट हो गया। सो ग्रुपिंग ऑफ द टास्क, ग्रुपिंग ऑफ द टास्क इज कॉल्ड एज एपिक। ये एपिक है मॉड्यूल्स। तो आप पहले क्या करोगे, आप टाइमलाइन में जाओगे, पहले सारे मॉड्यूल्स और मॉड्यूल्स के अंदर के सारे टास्क यहाँ क्रिएट कर दोगे, वो ऑटोमेटिकली बोर्ड में आ जाएगा। सो दिस थिंग दैट आई हैव डन, मॉड्यूल 1 इसमें इतनी सारी चीजें, मॉड्यूल 2 इतनी सारी चीजें, मॉड्यूल 3 इतनी सारी चीजें, तो मेरा पूरा प्रोजेक्ट इसमें खत्म हो गया। ये मैंने यहाँ डाल दिया, विच इज कॉल्ड एज एपिक, हाई लेवल डिटेलिंग। डन। इज द एपिक क्लियर? आप सारे एपिक्स बनाते जाओ, सारा पूरा प्रोजेक्ट ये जो मैंने यहाँ बनाया है, ये सारी चीजें दैट विल रिफ्लेक्ट हियर, देन यू स्टार्ट वर्किंग हियर, राइट? इसमें असाइन कर दो जिसको असाइन करना है, फिर वो उसको मूव करता रहेगा, राइट? दिस यू कैन डू इट। सो हु इज दिस?
श्वेता, कैन यू कंप्लीट दिस टास्क? इसको कंप्लीट कर दो, एडिट करो, जाओ कंप्लीट कर दो, इधर मूव कर दो, कंप्लीटेड आना चाहिए। कैन यू डू इट? जिसको जो जो असाइन हुआ था सब कंप्लीट कर दो यार, गो अहेड एंड प्लीज कंप्लीट इट। ओके, सी, एकदम लाइव अपडेट। Yeah, see, done. One person has done. Now I can go here, I can chat with people, I can give comments. See, like now I can do at the rate, Ramneet, you know, can you please share the files? ना इमोटिकॉन डाल दो, इमेज डाल दो, फिर वही है यार, वो चैटिंग वाली बात होगी। ठीक है, सेव कर दो, रिकॉर्ड कीपिंग भी हो जाता है यहाँ पे। डन, डन, think almost ये रहा बोर्ड पूरा। Okay, then you can come here to the timeline. You can filter, you can check the status, कितने डू हो गए, कितने डन हो गए, कितने कंप्लीट है, इतने डू है, इतने प्रोग्रेस में, ये सारी चीजें हमें दिख जाएगी। ओके, नाउ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये टाइमलाइन क्या है ना, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हाउ मेनी टास्क वाज कंप्लीटेड, हाउ मच वर्क वाज डन, ये यहाँ पे आपको दिखाएगा। आज एक ही दिन है तो इतने दिख रहे हैं भाई, कल आओगे, कल क्रिएट करोगे और भी दिखेगा, टाइमलाइन बढ़ती जाएगी। ओके, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड यू विल हैव अ क्लियर व्यू ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। देन दिस इज हाउ यू मैनेज योर कंप्लीट टास्क। तो आज का आपको दिख जाएगा, एक वीक का आपको दिख जाएगा, एक मंथ का आपको दिख जाएगा, एक क्वार्टर का आपको दिख जाएगा। जैसे जैसे आप इसको आगे बढ़ाओगे इट विल शो इट टू यू, यू कैन इनलार्ज इट आल्सो। आज की चीजें ये ऑलरेडी दिख रही है आप दैट। ऑलराइट, बोर्ड एंड टाइमलाइन। तो बोर्ड मेंटेन होता है, Kanban इज ऑल अबाउट, Kanban इज बेसिकली बोर्ड मैनेजमेंट। जैसे कॉलेज में आपने बोर्ड देखा होगा ना, ऊपर लगे रहते हैं व्हाइट बोर्ड, उसमें चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें लगी रहती है, सेम चीज बोर्ड मैनेजमेंट। Kanban के और भी टूल्स है, स्लैक, ट्रेलो, स्लाइटली डिफरेंट होता है, आसना, ये बहुत सारे टूल्स हैं दैट विल सी इन द डिटेल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम which will be happening very soon. You can connect your code also. इसमें अभी गिटहब कनेक्ट होता है, अब ये इतना सिंपल नहीं है, बस इतना है, खत्म है। इसमें कोड कनेक्ट होता है। स्क्रम मास्टर विल डू स्क्रम मीटिंग्स, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऐड होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं which we'll discuss. Now this is Kanban model. Now can we use Scrum model? Yes, we can also convert this into a Scrum model. How? Let's go to the settings, project setting. ये रहा मेरा प्रोजेक्ट, project setting. Yeah, I like to go back and show you something. So Jira can be used as Kanban. I can use Jira as Scrum. I can use Jira as software testing model. I can use it for any type of project management, any type of project management. Personal task manager. I can use Jira for business management. I can use Jira for many other things. ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे पूरे के पूरे, ऐसा सेम नहीं दिखाई देगा। ये सारे मॉडल्स आपको मिल जाते हैं, सर्विस के लिए, वर्क फ्लो के लिए, प्रोडक्ट के लिए, मार्केटिंग के लिए यूज कर सकता हूँ मैं, एचआर कंपनीज में पीपल मैनेज करने के लिए, फाइनेंस के लिए, डिजाइनिंग के लिए, पर्सनल चीज़ों के लिए आई कैन हैंडल, आई कैन यूज इट, ऑपरेशंस के लिए, लीगल सर्विसेज, बैंक मैनेजर्स से लेकर के लॉयर्स इसको यूज कर सकते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, आईटी,
फैसिलिटी मैनेजमेंट यानी हार्डवेयर मैनेजमेंट, यानी कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हो इसको। मैंने आपको बताया था, आई रिसेंटली वर्कड ऑन केलॉग्स, तो फैसिलिटी मैनेजमेंट ईआरपी जैसा यूज करते हैं। यू कैन यूज इट इन मेनी वेज। नाउ ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड। ये अभी वो बहुत डिटेल में जाएगा, 30 आवर्स में ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। ऑलराइट, सो नाउ आई वांट टू स्विच इट टू, या आई हैव नॉट येट डन इट वेदांत। अब मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो ये मेरा प्रोजेक्ट है, राइट। कंबन मॉडल देख लिया, अभी हमें इसको स्क्रम में डालना है, तो नया बनाने की जरूरत नहीं है। इसको नया बनाने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट सेटिंग्स, गो टू प्रोजेक्ट सेटिंग्स। देखो एपिक, टास्क एंड सब टास्क, तीन चीज होती है इसमें। आप अपना भी कुछ टाइप का बना, सो यू कैन कस्टमाइज इट इन योर वे। मैंने दो एडमिनिस्ट्रेटर भी बना दिए। ओके, नाउ दिस एडमिनिस्ट्रेटर कैन मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस। नोटिफिकेशंस, कोई भी चीज क्रिएट हुआ तो आपको ईमेल आएगा इमीडिएटली। आरपीआई इंस्टॉल्ड है इसमें। ऑटोमेशन, ये हम बाद में बात करेंगे, ऑटोमेशन कैसा, ये सब एडवांस फीचर्स। इशू टाइप्स दिखाया आपको, यू कैन कस्टमाइज इशू टाइप्स। फीचर्स, हियर इज हाउ यू विल कन्वर्ट इट। टाइमलाइन है हमारे पास, बोर्ड है हमारे पास, राइट। कोड कनेक्ट कर सकते हो, अगर करना है करते हैं हम कोड कनेक्ट यूजली। सिक्योरिटी और रिलीज, ये टेस्टिंग में काम आता है, डिप्लॉयमेंट की चीज है, ये भी होता है ये, बट ये अलग चीज है। प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ अपलोड कर सकते हो, यू कैन अपलोड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स हियर। In order to convert this into Scrum, I need backlog. मैंने बताया ना स्क्रम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, बैकलॉग। याद आ रहा है? टूल से कुछ नहीं होता दोस्त, प्रोसेस पता रहना चाहिए। बैकलॉग, स्क्रम इज ऑल अबाउट बैकलॉग। ये देखो बैकलॉग, तो बैकलॉग एनेबल किया मैंने। बोर्ड है तो मैं बोर्ड डिसेबल कर सकता हूँ चाहिए तो, बट रहने देते हैं। सो आई विल यूज कनबन प्लस स्क्रम टुगेदर। रिपोर्ट, इशू नेविगेटर्स, प्रिंट एनेबल करना पड़ेगा। कितना एफर्ट लगेगा, ये सब ऑप्शनल फीचर्स है, मैं इसको एनेबल कर सकता हूँ। स्टोरी पॉइंट क्या है, टाइमलाइन क्या है, ऑल एडवांस फीचर्स विल डिस्कस इनटू द फर्दर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। Okay, now once I've done this setting, backlog on, see basic backlog और sprint दो चीज ऑन कर दो बस। Have you done it? नहीं, आपको नहीं करना, मैं ही कर सकता हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। बट आई हैव एडेड धनमीत एंड श्वेता ऑल्सो। नवनीत आप भी ये चेंजेस कर सकते हो, बिकॉज यू आर ऑल्सो एन एडमिन नाउ। आई विल एड एवरीबडी एज एडमिन later on. Can you see something new happening around here? Did you see some UI changes? No, I can see here backlogs, issues. ठीक I'll just refresh it for that backlog. Backlog.
अब तक जो किया भूल जाओ. Let's come back to now. I'm using it as sprint. Guys, checkpoint. Are we here? Are we all here? Any doubts? Project settings features. Turn on two things: backlog and sprint. Additional options भी turn on किए हमने. जरूरत नहीं था but sprint. ये रहा modules. अभी sprint पे बात करेंगे. We'll talk about sprint. So first sprint by default added है. I can create more sprints. ये मेरा backlog आ गया पहला वाला. मैंने backlog create sprint पहला बनाया. So first thing is sprint number 1. Can you see also the key being used? ये project का key रहता है, इससे मुझे पता चलेगा ये sprint किस project का है. In case I am having multiple projects, so I can using Jira manage multiple project at same screen. So let's edit my sprint first. ये रहा. अभी sprint कितने दिन का होता है? Ideally it should 1 week to 4 week. You cannot change sprint का time in between. एक week set करोगे तो एक week. That depends upon skill set of my current team. एग्जिस्टिंग टीम के स्किल सेट्स पे होता है. आई होप यू नो स्प्रिंट कैसे चूज करना है. अच्छा, ये सारा डॉक्यूमेंट, ये जितना भी हम काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर मेंटेन कौन करता है? हु इज द एडमिनिस्ट्रेटर हियर? हु इज द एडमिनिस्ट्रेटर हियर गाइस? एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, रोल क्या प्ले करता है, कौन होता है एडमिनिस्ट्रेटर? स्क्रम मास्टर. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मेंटेन्ड बाय माय स्क्रम मास्टर. सपोज आई से 1 week स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, एंड डेट वो अपने आप ले लेगा. हर स्प्रिंट का गोल होता है. सो माय गोल हियर वुड बी यूजर मैनेजमेंट अपडेटेड. ये रहा, बनाया मैंने. अब ये मेरे जितने भी थे ना इश्यूज, ये मैं इधर डाल देता हूँ. लो, ये लो बैकलॉग्स. सो बैकलॉग में आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू इन बैकलॉग? आप सारे इश्यूज क्रिएट कर देते हो. जैसे ये है, ये सारे क्रिएट कर दोगे आप. एंटर बटन दबाना होता है, ये क्रिएट हो गया. Just give me a second.
Nobody saw. Okay, okay, okay. Hi guys, am I audible now? Can you just give me a quick confirmation if I audible, please? Yes, sir. Yes, no. Ah, I'm so sorry. I was, connected with the hotspot, and yeah, I got a quick phone call. But then, if you don't pick it up, they'll keep ringing it. Thank you so much, guys. Thank you so much, and thank you so much for being so patient. Also, I always try to give you best experience in any of the training programs. But ठीक है, आप आना बाद में आपके लिए बहुत अच्छा प्लान करेंगे. Okay, so number one, backlogs बना दिया आपने. Backlog is a simple list of all the things that you have to do. Okay, this is a kind of a backlog. ये रहा backlog list. ये पूरा backlog list बन गया. फिर आप उसको sprint में assign कर दोगे. तो एक sprint में उतने ही टास्क छूटते हैं जितना sprint की टाइम लिमिट होती है. अंडरस्टूड? ऐसा नहीं भरते जा रहे हो. ओके, सो 1 वीक का स्प्रिंट है. 5 लोग हैं टीम में, अभी तो 9 लोग हैं, 10 लोग हो गए, चलो 10 लोग हैं. 8 घंटा काम है, 80 आवर्स का मेरा पर डे का टाइम निकल के आ रहा है. इंटू 8 पीपल, 10 इंटू 5, 400 आवर्स. तो मैं उतने ही टास्क डालूंगा जो 400 आवर्स में हो जाएंगे. तो हाउ डू वी डू दैट? राइट, यू क्लिक ऑन इट. कैन यू सी नाउ देर इज समथिंग कॉल एज टाइम ऑल्सो एडेड. इसको हम एडिट कर लेते हैं. इश्यूज पे जाते हैं, यहाँ इजीली हो जाए. तो यहाँ पे ना इश्यूज बोलते हैं हम, सारे इश्यूज जो जो आपने वहां डाले ये यहाँ आ जाते हैं इश्यूज. ओके, ये रहा इश्यूज. कैन यू सी देर इज टाइम ऑल्सो एडेड हियर? आर यू एबल टू सी टाइम? 15 मिनट टू 4 आवर्स. इसे विल टेक 10 मिनट्स. डन. आई कैन ऑल्सो मेक इट 1 आवर. 60 मिनट्स. तो एम एम डालना होता है 1 आवर. तो इतना टाइम भी हम इसमें ट्रैक कर सकते हैं. दैट्स ब्यूटी ऑफ इट. माई Kanban model does not track time. My Scrum does. अभी क्योंकि स्क्रम एनेबल कर दिया तो बोर्ड का कोई मतलब नहीं है. बोर्ड डिसेबल हो गया, दिख रहा है. बैकलॉग ये रहा. मैं टाइम भी डाल दूंगा एवरी टास्क को, विच आई एम डूइंग हियर. आई एम एडिंग द टाइम, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ये सारी चीजें हो गई हमारी. ओके, असाइन किसको करना है वो भी देख लूंगा. एस्टिमेट कितना देना है, देखो ये रहा. इतने डेज का, इतने वीक्स का. आई कैन गिव एस्टिमेट टाइम ऑल्सो. साहब असाइन द टास्क टू एवरी वन. ये भी असाइन कर देते हैं किसी को भाई. आदित्य को असाइन कर देते हैं. ये भी किसी को असाइन कर देते हैं. नविदिता को असाइन कर देते हैं. ये सबको असाइन हो गया है. राइट, यू ऑल्सो हैव टू गो एंड एडिट. You have to give estimate. Without estimate, it does not work. I think H करेंगे तो आ जाएगा. H 2H. W करोगे तो week. Estimate hours. 2 घंटा remaining. Done. Once I have assigned everything to everyone, I will click on start sprint.
स्टार्ट। अब भाई ये स्प्रिंट हो गया स्टार्ट, ये देखो बोर्ड में दिख रहा है, स्प्रिंट स्टार्ट हो गया है। टाइमलाइन में आ जाओ, ये देखो यहाँ दिख रहा है, दिस इज माई स्प्रिंट नंबर 1 एंड एवरीथिंग इज देयर। सो विल कीप ट्रैकिंग क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसमें पूरा आपको दिख जाएगा वन बाय वन इन माई स्प्रिंट। अब जब आप स्प्रिंट करते हो ना तो ये बोर्ड वगैरह डिसेबल कर देना चाहिए यूजुअली, ये दोनों एक साथ नहीं यूज करते, बट आई हैव केप्ट इट जस्ट सो दैट आई कैन एक्सप्लेन। ये रहा मेरा स्प्रिंट 1, I can create more and more issues like this, which is nothing but my backlogs. Once this sprint is complete, suppose ये sprint हो गया complete, और ये sprint complete होने से पहले क्या बोल रहा है, सुनो भाई 3 issues अभी भी बाकी है, राइट? तो चलो ये issues complete कर लेते हैं। डन, ये status है इसमें। Here we change status, we don't change cards. Complete. Now Scrum is also a reward type of a system. हर sprint खत्म होने पे टीम को reward करते हैं। कैसे reward करते हैं? तुम्हारी झूठी तारीफ करते हैं, वेरी वेल डन टीम, वेरी नाइस, वी हैव कंप्लीटेड आवर स्प्रिंट इन टाइम, वी हैव अचीव्ड ऑल द गोल्स, -400 से आज हम -300 पे आ चुके हैं, वेरी गुड धनमीत, वेरी गुड नविदिता, अमेजिंग वर्क गाइस, टीम वर्क, स्प्रिंट इज कंप्लीट, लेट्स नाउ कंप्लीट नेक्स्ट 2 स्प्रिंट्स। हाँ, यहाँ मोटिवेशन फैक्टर बहुत ज्यादा रहता है टीम में। ओके, वन स्प्रिंट इज कंप्लीट, देखो स्प्रिंट गायब हो गया ना, दैट स्प्रिंट इज कंप्लीटेड नाउ। Now I can create next sprint. Next sprint will automatically come from 28th of July. Automatically telling 28 for July to 4 July, 4 August, 1 week, बाकी के टास्क में डाल दूंगा। Likewise, before I start the project, all my sprints are here, all my tasks and backlogs are here. I have assigned everything to everyone. Everyone comes here, checks their backlogs and work on a day-to-day basis. All my backlogs or issues are reflected here. I can filter it based on type. I can filter it based on किसको असाइन किया था, निवेदिता को क्या क्या असाइन किया था, देख लेंगे भाई, राइट? ये रहा एक टास्क असाइन किया था। आई कैन फिल्टर द स्टेटस, कितने चीज़ें हो चुके हैं, कितने चीज़ें डन में है, कितने चीज़ें इन प्रोग्रेस में, एंड आई कैन यूजुअली अकॉर्डिंगली टॉक टू द पीपल। मॉड्यूल्स कितने हैं, सब टास्क कितने हैं, टास्क कितने हैं, ये भी मैं चेक कर लूँ। हियर ऑल्सो आई कैन क्रिएट एपिक। इफ यू गो टू बैकलॉग, राइट, इफ यू गो टू बैकलॉग, I can create different issues and I can assign them to the epic also, right? Epic is here in my timeline. Sprints, which is nothing but ऊपर वाला, create epic, registration, and then I'll create issues here accordingly. And किसका है ये, किस epic का है ये डाल देंगे। I can also enable the epic here. तो ये मॉड्यूल को ये स्प्रिंट में खत्म किया, एक मॉड्यूल एक पर्टिकुलर स्प्रिंट में खत्म होता है दोस्त। तो आई कैन क्रिएट एपिक एंड असाइन इट हियर ऑल्सो। अगर आप एपिक को यूज करना चाह रहे हो, नहीं यूज करना है, सिर्फ इश्यूज को लेकर के चलना है, तो वो भी कर सकते हो। एपिक इज लाइक योर मॉड्यूल कैटेगरी, मेजर कैटेगरी। सो दिस इज मच बेटर एंड यू कैन लास्ट में एनालाइज इट ऑल्सो कि क्या चल रहा है मेरे स्प्रिंट में। बर्न डाउन रिपोर्ट, बर्न अप चार्ट, ये क्रिएट कर सकते हो आप। सो बर्न डाउन चार्ट क्रिएट होता है यूजुअली। देयर आर मोर चार्ट्स, विल टॉक अबाउट दिस इन एडवांस ट्रेनिंग्स। मेजर थिंग इज बर्न डाउन चार्ट, एक्सपेक्टेड वर्सेस व्हाट इज हैपनिंग। ये हमारी गाइडलाइन है, ऐसा होना चाहिए, सिस्टमैटिकली काम धीरे धीरे खत्म होना चाहिए।
बट हम देखते हैं कि कितने एक्चुअली हो गए खत्म। आइडियल है और कितना हुआ है देखो। तो ये हमारा टास्क ये रहा, क्योंकि अभी तक हमने कुछ खास खत्म नहीं किया, और दूसरी चीज एक ही टास्क है, तो ये धीरे 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 ना ऐसे बढ़ता रहेगा और इसको मैच करने की कोशिश की जाती है। सो सिंपल स्टार्ट्स वी ट्राई टू मैच दिस आइडियल थिंग। ये जितना इसको मैच होगा उतना ज्यादा टीम अच्छी परफॉर्म कर रही है। इज द बर्न डाउन चार्ट क्लियर गाइस? आपको बर्न डाउन चार्ट क्या बोल रहा है? बहुत सिंपल सी चीज बोल रहा है। वी स्टार्टेड विद -400 टास्क, as time progresses -300, -200, -100, 0, burn down. So this is an ideal graph. Exponentially you are finishing everything over a period of time. एक्चुअल कितना हो रहा है वो ये ऑरेंज बताएगा। अभी एक आया खाली, देखो क्या होगा। अभी ग्राफ ऐसा है, क्यों? एक टास्क खत्म हुआ है, इतना टाइम हुआ है, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ेगा, टाइम आगे बढ़ता जाएगा, और ये भी ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये हम मैच करने की कोशिश करते हैं इस टाइम। स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग में ये चेक करते हैं, प्रोडक्ट ओनर के पास ये जाता है। इज इट क्लियर? सर्टेन एडिशनल थिंग्स, यू कैन कनेक्ट योर कोड, यू कैन डू लॉट ऑफ ऑटो। ये दुनिया यहाँ खत्म नहीं है, ये दुनिया बहुत डीप में जाती है दोस्त। ऑटोमेशन, देर इज प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोडिंग यू कैन डू हियर। फॉर एग्जाम्पल स्क्रम मास्टर ने मीटिंग लिया, वो किसी ने पूछा था कल कि सर क्लाइंट नहीं आया, तो अब तो ये एमओएम बनता है। ट्राई दिस टेम्पलेट। एमओएम में क्या डिस्कशन हुआ, कौन कौन आया था, कौन कौन नहीं आया था, ये सब चीजें हम डाल देते हैं। 10 यूजर्स के लिए फ्री है, अनलिमिटेड स्पेस। द टूल नेम इज कॉन्फ्लुएंस, ये एक एड ऑन है जो अगेन एटलासियन का ही है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। यहाँ पे आप ऑनलाइन कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो। इट्स जस्ट लाइक गूगल वर्ड, गूगल डॉक्स, जस्ट लाइक गूगल डॉक्स बट वेरी स्पेसिफिक टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। या गो टू कॉन्फ्रेंस। So there are 10 to 12 different types of documents जो बनाने पड़ते हैं डेवलपमेंट में। टास्क डॉक्यूमेंट, मॉड्यूल डॉक्यूमेंट, एमओएम डॉक्यूमेंट, चार्टर डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, है ना? ये स्किप 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 स्किप, फिनिश। I can invite my team members to come and collaborate on this document which is getting created, है ना? मैं यहाँ टीम मेंबर्स को बुला सकता हूँ। जैसे मैंने जीरा में बुलाया, मैं यहाँ भी बुला सकता हूँ। एमओएम, एमओएम नहीं है। ये रहा, कनेक्ट किया। मिनट्स ऑफ मीटिंग, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट मीटिंग, डिसीजन ट्री, ये सब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वी विल डिस्कस दिस। These documents are part of software designing and comes under the field of आर्किटेक्चर एंड डिजाइन इंजीनियरिंग। ये देखो, ये एमओएम, आज का डेट, कौन कौन पार्टिसिपेंट आया, तो मैं यहाँ पे नवनीत को मेंशन कर सकता हूँ। आई रिमेम्बर Danmeet is good with rap. Am I right? You wrote one nice rap song also. If my memory recollects nicely. Yeah? ये सारे टीम मेंबर्स ऐड हो गए। कौन कौन प्रेजेंट था उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा मैं।
टाइम क्या था, डिस्कशन कब लिया कब नहीं लिया, क्या क्या एक्शन हम लेने वाले हैं, या क्या क्या डिसीजंस लिए हैं इस मीटिंग में, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप डाल सकते हैं। ओके, फिर ये सारे टीम मेंबर्स के पास रहेगा, और भी बहुत सारी डिटेल्स होगी एमओएम वगैरह की। तो देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट दैट इज प्रोड्यूस्ड। ये मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर करता है भाई, और स्क्रम मास्टर, एमओएम स्क्रम मास्टर बनाता है ये, और ये मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर, सोल्यूशन आर्किटेक्ट, सिस्टम आर्किटेक्ट बनाते हैं। डन। एंड देन देर आर सर्टेन सेटिंग्स दैट यू कैन डू। प्रोजेक्ट्स की बहुत सारी सेटिंग्स है जो आप कर सकते हो, लाइक खुद के एपिक्स बना सकते हो, टीम मेंबर्स और ऐड कर सकते हो, फीचर्स टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कर सकते हो। यू कैन कनेक्ट मेनी टाइप्स ऑफ एप्स, स्लैक, ट्रेलो, गूगल ड्राइव, लिंक्डइन, बहुत सारे ऐप्स कनेक्ट कर सकते हो। डिस्कवर ऐप्स करो, बहुत ऐप्स हैं, राइट। इफ यू डोंट वांट टू यूज जीरा, you can also manually implement it using excel। एमओएम बनाना है तो एमओएम के डॉक्यूमेंट्स है, मैनुअली भी कर सकते हो इसको, ऐसा कोई जरूरी नहीं इससे ही करो, बट इसमें दो चार एक्स्ट्रा फीचर्स है। डेवलपमेंट के टूल्स है, मॉनिटरिंग के टूल्स है, टाइम ट्रैकिंग के टूल्स है, यूएमएल डायग्राम्स के टूल्स है। यूएमएल डायग्राम्स आपको पढ़ाया जाएगा, अगर नहीं पढ़ाया तो ओके। इसके टूल्स है, चार्टिंग ऑप्शंस है, कोड के ऑप्शंस है, एचडीएलसी साइकिल के सारे टूल्स है इसके अंदर which you can integrate. Now, if you don't want to use Jira, you can use this Excel, MOM। जीरा पे ही जाके बनाओगे जरूरी नहीं है ना, ऐसे भी बन सकता है। एजेंडा क्या है, आउटकम क्या है, मीटिंग मीटिंग स्टार्ट कब हुई, एंड कब हुई, क्या क्या डिसीजंस लिए, नेक्स्ट मीटिंग का एजेंडा क्या है, क्या सीखा, राइट। इस मीटिंग में कौन कौन आया था, कौन कौन नहीं आया था, भी एक एमओएम होता है। टास्क असाइन किया है, टास्क का टास्क डॉक्यूमेंट बनता है, मैनुअली भी हम इस चीज को करते हैं। ये असाइन किया है, इसमें ये काम करना है, राइट। ये डेटाबेस रहेगा, ये डिजाइन रहेगा उसका, इन सब पॉइंट्स का टेक केयर करना है। टास्क को सब टास्क में डिवाइड करो, आपने अप्रूवल लिया है या नहीं लिया है, कोई डिपेंडेंसीज है तो बताओ, ये भी रहता है। वी कैन यूज दिस ऑल्सो, राइट, सो एंड ऑन सो फोर्थ। प्रोसेस पता रहना चाहिए, टूल कोई सा भी यूज कर सकते हैं। जीरा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल्स, राइट। विद दैट आई थिंक वी विल क्लोज दिस सेशन। वी हैव कवर्ड, इतना ना 1 साल 2 साल लग जाता है लोगों को सीखने के लिए कंपनीज में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। If you have understood the session, you are good. Now you need to do certain practice. कोशिश करना आपका वो जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होगा इसके पैरामीटर के अंदर कटअप करने की कोशिश करना। ओके, टाइम ट्रैकर, शीट्स, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होंगे, एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ जीरा। यू कैन यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स तो इस पे इजीली रन कर सकते हो आप इतने में, एंड यू कैन एक्सप्लेन सम ऑप्शंस। ओके, फर्दर मोर विल प्लान मोर थिंग्स फॉर यू। डन। एनी डाउट्स माय डियर फ्रेंड्स? नो? डन। Any doubts? Am I audible? Yeah, plain, simple, and easy. Okay. Okay. How did you like the session? Was it meaningful for you? Can I have a quick feedback, and let this be an audio feedback, please? And camera भी on कर लो एक आध भाई, क्या मतलब क्या चल रहा है यार? Camera on कर लो. Feedback. Can I have a quick feedback? How did you like the session? Did you enjoy this session? Was it good? Nice? Fine? Can I have some feedback, please? Yeah, we'll close the sharing. Apart from the internet issue that happened just now. No It thank was yous. definitely good. Come on. Okay. All right, guys. So that'll work, guys. With this, we'll close today's session. Thank you so much for joining. We'll plan your further more sessions. 30 hours of Scrum certification. The link is there in the chat box. If you are interested, if and only if you are interested, you please apply for it. You can also share it with other branches who wants it. Okay.
बी एस सी आई टी बी वॉक दूसरे लोगों को भी आप इनवाइट कर सकते हो. इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एवरी वन. दिस 30 hour of certification program will have the same thing in more details, more options, more tools. और पूरा डिटेल में जाएगा. एट द एंड देयर वुड बी एन असेसमेंट. इसका असेसमेंट भी होगा, इसका एग्जाम भी होगा. बेस्ड ऑन द असेसमेंट एंड बेस्ड ऑन द एग्जाम you would be registered as a scrum master and you will get a certification. तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इंफॉर्मेटिक्स में एज ए स्क्रम मास्टर रजिस्टर्ड रहोगे और आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, राइट, फॉर a period of 5 years. You can apply for it if you want, and these all things which all you learn you can implement in your university projects also. Plus, whether you learn these things or you don't learn these things, you have to work within this framework when you go to the company. So now your choice is whether you want to take help from us, learn these things, and then go to industries, fetch a higher package, and work with more sincerity and work with more professional things, or would you like to struggle for your placements and jobs and everything and all together with your life. Software engineering बहुत तगड़ी चीज़ है दोस्त. Work on it. You'll slowly realize सब कुछ यही था. With that, thank you so much, everybody. I'll see you again very soon. This is your trainer coach, Professor Rajit Sishokana, signing over the day. In today's session, we have tried to understand what is Agile, what is Scrum. We have also seen SDLC, how SDLC is basically so important thing. Software engineering, SDLC has many models. Out of many models, we have Agile. Agile has many models. Out of many models, we have Agile Scrum, and we also have Agile Kanban. Right? We have also seen how Kanban works. We have also seen how Scrum works. It's an effective project management tool. It's a way in which you can implement SDLC. SDLC is software development lifecycle. Why do we need software development lifecycle? So that we can produce quality software. Guys, do remember the formula. Q is equals to TC squared. Quality is what we want. You want to build complex softwares in less time, less cost, less team, and with n number of changes. This formula has been given by one of the greatest data scientists in the history of India. Q is equals to TC squared, which is what the industry is all about. Quality is equals to less time, less cost, less team, and forever changes. And the only way possible to achieve is through using scientific laws and principles. And all of these scientific laws and principles are covered in software engineering or advanced software development methodology, which has requirement engineering, which has design and architectural engineering, which have testing engineering, which have integration engineering, which has implementation engineering, which have network engineering, right? And we have a lot of tools and a lot of project management softwares which we have discussed today. Thank you so much, guys. I'll see you soon. Bye bye.